Hello students, I hope that you people are preparing well for your April Mains 2019. Okay, in that concern, I have already uploaded one revision video in the topic matrices. I hope that you people have already watched that and get benefited. Okay, I have already explained there that if they will ask the questions on matrices, then the topics will be the multiplication of matrices, adjoint of a matrices, and symmetric and skew symmetric and orthogonal matrices. Okay, so continuing this series, we will revise determinant problems in this particular video. Okay, so I have considered only four problems. These four problems are very fundamental. Not only you will study about the properties of solving the determinants, but also you have to understand some other important basics like the cube root of unity, like the sum and product of roots of equations, okay, cubic equations, the quadratic equations, and some other concepts, so that you people have complete practice in this particular video. Okay, what happens, there is a problem, surely 100% sure questions on determinant topic, especially the solution of solving the linear equation using the determinant and matrices. That is the condition of solvability. That is, the equation will have no solution, many solution, or infinite solution, trivial solution, non-trivial solution. So on this condition of solvability, we will have one more video. That is, the next video will be on the condition of solvability. That is under the chapter matrices and determinant. Okay, but here we will solve the problems which are based on the properties of the determinant and some other important concepts which are involved here in this problems. Okay, let us start with the first one, that is the 2017 base problems. So let us start. Let omega be a complex number. Omega be a complex number. That is a problem for the students. Okay, I will explain. What is that? As such that 2 omega plus 1 equal to z, and when z equal to minus 3 square root, right? So क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ते, तो उनको लगता है ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर, और जिस हिसाब से ये कंडीशन दी हुई है वहाँ उसको प्रॉब्लम्स आती है. तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी the 2 omega plus 1 equal to z. 2 omega plus 1 equal to z. So 2 omega plus 1 equal to, what is z? Square root of minus 3. Square root of minus 3 is nothing but root 3 iota. Correct? And hence omega is plus 1 will go this side, that becomes minus 1 plus root 3 iota divided by 2. And from here, now we know that this omega, which is a complex number, satisfying this condition is nothing but a cube root of unity. So if it is a cube root of unity, that means it must follow the properties of the cube root of unity. What are those? That 1 plus omega square equal to 0. Okay. So 1 plus omega square equal to 0. Therefore, this minus omega square minus 1 is replaced by omega, and also omega cube equal to 1. So therefore, omega 7 will be omega. So I can replace this omega 7 by omega. I can replace minus omega square minus 1 by omega. Correct? So this determinant in fact now converted into the 1 1 1 1 omega square 1 omega square omega, that is equal to 3, right? Now what happens, we will apply the operations, elementary operations. Okay, that is the properties of the determinant, that is invariance properties of the determinant. What is that invariance properties of the determinant? That is, we can apply the operations like that: Ri plus something k Rj, or Ci plus kCj. By applying these type of elementary operations,
there will be no change in the determinant value. That property is called as the invariance property of the determinant. Okay, very famous property. Almost in every problem we have to apply that property, correct? Okay. So we will apply over here. How we will apply? Is there any such operation we can apply so that we can apply some properties of the cube root of unity? Yes, of course. 1 plus omega square. 1 plus omega square plus omega. So we will apply this property C1, that is C1 plus C2 plus C3. So this determinant 1 plus 1 plus 1 3, 1 plus omega square, 1 plus omega square. So C2 is as it is 1 omega square, 1 omega square omega. Okay, so this is 0, this is 0. So that this will, that is equal to 3k. Okay, so that is 3 0 0 1 omega square, 1 omega square and omega, that is equal to 3k. So that is our basic aim in evaluating the determinant. What is that? That is, the determinant can be easily evaluated if we have two zeros in any one of the rows or column, so that we can easily evaluate this determinant. So by applying this C1 plus C2 plus C3 elementary operation and applying this property of the cube root of unity, we have seen now that there are two zeros in the first column. So I can now easily evaluate this determinant, correct? And that is, see, 3 into this is omega square minus omega 4, and rest of the thing will be 0, that is equal to 3k. Correct? So by comparison, I can have k equal to omega square minus omega 4, omega square minus omega, because omega 4 is omega cube into omega. So omega cube is 1, correct? So हाँ, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आता है. See, in the option we are having k is either minus z minus omega and 1. तो यहाँ पे भी आपको छोटा सा ट्विस्ट दिया हुआ है, करेक्ट है? तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा कैसे अप्लाई करेंगे? तो यहाँ पे फिर से हम ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. अप्लाई दिस प्रॉपर्टी अगेन. This omega square can be replaced by -1 minus omega. So this is -1 minus omega, and again already minus omega, -1 minus 2 omega, take minus common, 1 plus 2 omega, 1 plus 2 omega is z. So therefore this is minus z. So finally our answer is minus z. This was 2017 main question. And here we have learned one more important concept, that is the cube root of unity and its properties. And of course we have applied the elementary operation, that is the properties invariance property we called for the determinant. So in that way we can solve the determinant problems. Okay, come to the next problem. This is again a very interesting problem. Okay, if alpha beta are roots of alpha beta gamma roots of x cube plus ax square plus b equal to 0, then the determinant alpha beta gamma alpha gamma alpha beta is equal to what? Option A minus a cube minus 3b, and option C a cube plus 3b, and option D is a cube. करेक्ट है? तो यहां देखते हैं इस प्रॉब्लम में बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये. आपको इसमें दूसरे कॉन्सेप्ट जो इन्वॉल्व हुए है, तो सी दैट इज द क्यूबिक इक्वेशन. करेक्ट? क्यूबिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म में बता रहा हूं. दिस इज वेरी फंडामेंटल. यू कैन जनरेट सो मेनी प्रॉब्लम्स बाय गिविंग
different values to a, b and c, right? So here x cube plus ax square plus beta, तो जनरल फॉर्म क्या होता है ax cube plus bx square plus cx plus d that is equal to 0 is a cubic equation when alpha beta gamma are its root, then alpha plus beta plus gamma, the sum of all the root is given by minus b by a, and alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is given by c by a, and the product of all roots is given by minus d by a. So this is the one important concept. Okay, and how to remember this? Just replace this sign. If it is plus, then it is minus. If it is minus, then alternate sign plus minus and like that. Correct? So they are minus b by a plus c by a minus d by a. In that way, you can also remember. So this is one important aspect. So here in this particular question, we are having x cube plus ax square and hence 0x plus b that is equal to 0, correct? With alpha beta gamma are its roots. So therefore alpha plus beta plus gamma is given by minus a, and alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is 0, and alpha into beta into gamma is minus b. So these are the three important results which we can use in this particular determinant problems. Correct? So this is all about the cubic equation, sum of roots, product of roots, and this formula. Correct? In this particular question, we are given as x cube plus ax square plus b equal to 0. That means that the coefficient of x is 0, and hence this alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha equal to 0, and alpha plus beta plus gamma equal to minus a, alpha beta gamma equal to minus b. So now come to the determinant. Okay, this is the cubic equation is sum of roots and product of roots. Okay, now what is that? Alpha beta gamma alpha gamma alpha beta. Correct? So I can apply the properties now. So just apply this one again, c1 plus c2 plus c3. Correct? So you will get alpha plus beta plus gamma over here, alpha plus beta plus gamma over here, alpha plus beta plus gamma over here. Correct? तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को क्या करो, कॉमन ले लो. सबसे कॉमन में ले लिया मैंने, तो दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस इज 1 and these columns are same, beta gamma alpha gamma alpha beta. Correct? So now if suppose that you want to evaluate this determinant, so just apply any other operation so that this LT becomes 0. Correct? So I will apply R2 is R2 minus R1, R3 is R3 minus R1. Correct? Got the point? तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा. दिस विल बी 1 बीटा gamma 0. This is gamma minus beta. This is alpha minus gamma. This is 0. Alpha minus beta. This is beta minus gamma. Got the point? Now you can evaluate this. So this is finally equal to, what is that? Alpha plus beta plus gamma. ठीक है? And this one is gamma minus beta into beta minus gamma minus अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा माइनस गामा. ये हो गया. यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को हमको यूज करना है अलजेब्रिक आइडेंटिटी से. तो ये तो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेक्ट है. अब इसको देखते हैं, ये तो हो जाएगा क्या, बीटा गामा और ये माइनस बीटा स्क्वायर और ये माइनस. ओके, तो ये हो जाएगा बीटा गामा, then minus gamma square minus beta square, okay, plus beta gamma minus, यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये ब्रैकेट कंप्लीट, फिर से एक और ब्रैकेट. करेक्ट है?
नाउ अल्फा प्लस बीटा को मैं रिप्लेस कर देता हूँ. व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस ए. तो ये तो हो गया माइनस ए, ऐसे कर दो. और यहाँ पे देखेंगे आप, ये हो जाएगा गामा स्क्वायर माइनस माइनस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2 बीटा गामा होएगा, इधर माइनस अल्फा स्क्वायर, इधर प्लस अल्फा गामा, फिर प्लस बीटा अल्फा, फिर माइनस बीटा गामा, ये हो जाएगा. कैलकुलेशन इज ओके. अभी देखो ये होएगा माइनस ए. देन अब मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेशन यहाँ कर लेता हूँ, ये सबको मिटा देता हूँ. ठीक है, तो ये क्या होएगा, यहाँ आ जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस ए, तो पहले से ही है. अभी ये क्या हो गया, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर. ठीक है, दिस माइनस अल्फा माइनस गामा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर. देखो प्लस 2 बीटा एंड माइनस 2 बीटा, तो प्लस में आ जाएगा बीटा गामा प्लस में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा एंड प्लस गामा अल्फा, ये आएगा. ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस सब में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ. तो सब में से अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इधर ए कर दिया, प्लस हो गया. कोई डाउट? माइनस कॉमन लेते ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, ये बन गया. करेक्ट है. तो अब इसको मैं कैसे लिखिएगा, यहाँ फिर से अरेंजमेंट करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर. करेक्ट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, तो यहाँ 2 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा गामा प्लस 2 अल्फा गामा ऐड हो जाएगा. तो उसको बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे. ऑलरेडी अल्फा बीटा बीटा गामा माइनस अल्फा है, तो माइनस 3 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा आ जाएगा. ये बात फिर से मैं समझा देता हूँ. इसको मैंने कैसे लिखना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर इज देयर, बीटा स्क्वायर इज देयर, गामा स्क्वायर इज देयर, 2 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा गामा प्लस 2 गामा अल्फा एक्स्ट्रा आ गए. बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये माइनस 3 अल्फा बीटा माइनस 3 बीटा गामा माइनस 3 गामा अल्फा. आई होप दैट ये क्लियर हो गया स्टेप, कोई डाउट नहीं है. अच्छा, ये वाला वैल्यू हमने देखा था 0 था, ये 0 था, ये ओवरऑल 0 हो गया, तो ये तो हो गया ए. तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर आएगा. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या था, माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर. फाइनली मेरा आंसर मिलेगा ए क्यूब. करेक्ट है. आई होप दैट ये आपको समझ में आया होगा. करेक्ट. कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, वेरी फंडामेंटल. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, the third problem. Okay, third one is this one. Let f of x equal to cos x x1 2 sin x, this is x square 2x, this is tan x x and 2. Okay, then limit x tending to 0 f of x x square equal to option -1, this is 0 -2 and 0. very interesting problem. Okay, लिमिट का भी कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूटिलाइज करना है. तो क्या हो गया कि इस प्रॉब्लम्स को देखेंगे, f of x दिया हुआ है और फिर बाद में लिमिट निकालना है f of x by x square. तो पहले हम डिटरमिनेंट को देखते हैं. ये डिटरमिनेंट f of x से रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, एक तो ये चीज cos x, दिस इज x1, दिस इज 2 sin x, दिस इज x square, दिस इज 2x, tan x, x and 2. करेक्ट है. नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस in this column x is common, so I can take this x common from column number 2. Correct है. So that becomes x. So let us divide this common x in this side, so that is x. What the point? कैसे हुआ x? x लिया मैंने, तो ये बनेगा cos x, ये तो 1 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, this is again 1, so this is 2 sin x, this is tan x, this is 1, this is 2x and this is 2. करेक्ट, ये बनेगा. तो ये x को मैंने यहाँ ला दिया.
गॉट द पॉइंट। फिर से मैंने क्या करना है, fx by x है, फिर से मैंने x कॉमन लेना है। अब x कॉमन कहाँ पर है, देखो x कॉमन दिख रहा नहीं है, लेकिन यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ के नीचे में मैं x दे देगा, तो मेरा वो लिमिट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। ये स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मिस करते, वहां तो आपने x को कॉमन दे लिया, यू हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व दैट x इज कॉमन इन द कॉलम नंबर 2। नाउ देयर इज नो कॉमन x in any one of the row or the column, but we have to take x common from the row number 2. तो रो नंबर 2 से कॉमन लेंगे, तो दिस इज cos x, दिस इज 1, दिस इज 1, तो दिस बिकम 2 sin x by x. This is 1, this is 2, and this is tan x, this is 1 and this is 2. Got the point? अब ये x को यहाँ ला लो, अब हम लिमिट लेंगे। सो देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, लिमिट सारा इस डिटरमिनेंट के एंट्रीज में चले जाएगा। वी विल टेक द लिमिट ऑफ दिस वन, लिमिट ऑफ दिस वन, लिमिट ऑफ दिस वन, लिमिट ऑफ दिस वन, दिस वन, वी विल टेक द लिमिट ऑफ ईच एंट्री। करेक्ट, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ टेकिंग लिमिट ऑफ द डिटरमिनेंट। गॉट द पॉइंट। तो अब क्या हो गया कि यहाँ पे लिमिट लगा दो, तो cos 0 कितना है बोलो 1, ये कांस्टेंट है तो ऐसे ही ये 1, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो sin x by x का जो लिमिट आता है x टेंडिंग टू 0 1 आता है, तो दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2, tan 0 वापस से क्या होता है 0 एंड दिस इज 1, दिस इज 2. Now we have to evaluate this determinant. Anybody can now evaluate this determinant easily. Directly I can evaluate 1, 2 minus 2 0, correct? Then minus 1, this is 4 minus 0, that is 4, then plus 1, this is 2 minus 0, that is 2. So therefore minus 4 plus 2 and finally answer is minus 2. So this is minus 2. So this is third problem. Come to the final problem for this particular video, okay? And very interesting problem. I think the 2012 advanced problem, this one. 2012 एडवांस। तो क्या होता है कि लेट P is Aij be a 3 cross matrix, 3 cross 3 matrix, mind it, and Q is Bij, where Bij is 2 की पावर I plus j Aij, correct? And if mod of P equal to T, to find determinant of Q. So determinant of P is 2, then find determinant of Q. Option आपके है 2 की पावर 10, 2 की पावर 11, 2 की पावर 12 and 2 की पावर 13. बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन और आपको डिटरमिनेंट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी इसमें आसानी से समझ में आ जाएंगे जो प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करते हैं। वही फंडामेंटल भी है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें जैसे आपके रहते हैं उसको समझना है। तो कैसा है कि ये तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ये शॉर्टकट नोटेशन है, दिस इज द शॉर्टकट नोटेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ मैट्रिसेस, करेक्ट है कि नहीं? सो दिस इज Bij and Bij is 2 to the power I plus Aij. Because of this, as Bij is equal to 2 to the power I plus j Aij, and hence we say that this Q is a 3 cross 3 matrix because this P is a 3 cross 3 matrix and this Bij is given by this relation. Because of that, we will say that this Q is again a 3 cross 3 matrix. So I will write this Q as matrix. क्या आएगा? B11, B12, B13, correct है? Then B21, B22, B23, then B31, B32, B33, करेक्ट है? अब मुझे डिटरमिनेंट निकालना है तो मैं डायरेक्टली डिटरमिनेंट में आ गया। अब ये डिटरमिनेंट का साइन, ये डिटरमिनेंट का साइन, करेक्ट है? अब मैं वो रिलेशन को लिख के एंट्रीज को बनाता हूँ। तो देखो ये एंट्रीज क्या है, डिटरमिनेंट Q की बात कर रहा हूँ। एंड B11 ये 11 है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, A11 आ जाएगा 2 की पावर 2 A11, तो 2 की पावर 3 A12, 2 की पावर 2 A13, 2 की पावर 3 A21, 2 की पावर 4 A22। यहाँ से समझ में आ रहा है ये I की वैल्यू 2 है, j
ए की वैल्यू 2 है तो I प्लस जे, करेक्ट है, ये डायरेक्टली आ जाता है। तो 2 की पावर 5 a टू 3, 2 की पावर 4 a 3 1, 2 की पावर 5 a 3 2, 2 की पावर 6 a 2 a 3 3, करेक्ट है, ये बन गया डिटरमिनेंट। तो हमने क्या किया, वी हैव अप्लाइड दिस रिलेशन टू फॉर्म द मैट्रिक्स K and thereby the determinant Q. Okay, so by using this relation we form the matrix Q and thereby the determinant Q. Now apply the determinant properties. What are those? As you can see that this 2 to the power 2 is common in the first row, 2 to the power 3 is common in the second row, and 2 to the power 4 is common in the third row. So ये क्या हो जाएगा, सिंपली a11 हो जाएगा, ये 2 a12 हो जाएगा, ये 2 की पावर 2 a13 हो जाएगा, ये हो जाएगा a21 और ये 2 की 2 हो जाएगा, 3 कॉमन निकला था तो 2a22 हो जाएगा, ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, a23 हो जाएगा और ये a31 हो जाएगा, ये 2 की पावर यहाँ से 2 की पावर 4 कॉमन निकला तो 2a32 हो जाएगा, 2 की पावर 2 a33 हो जाएगा। ये हो गया, कोई डाउट है यहाँ तक कि नहीं? अब क्या करें, as you can see that 2 is common in the second column and 2 to the power 2 is common in the third column, so I can also take this 2 and 2 की power 2 from the second and the third column as common, so therefore we have now 2 की पावर कैसे देखो 7 and 2 9, then we have taken common this 2 from second column and this 2 की power 2 from the third column. So now a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, got the point? So 1 9 10 12, 2 की पावर 12, करेक्ट है, 2 की पावर 12 और ये डिटरमिनेंट P है। And what is the determinant P? Determinant P is 2. So 2 की power 12 into 2, that is 2 की power 13 is our answer. 2 की power 13 is our answer. Is there anything wrong? Correct है? कोई डाउट तो नहीं है? देख लेते हैं एक बार। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, करेक्ट? ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 को डाउट नहीं है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 ठीक है, ये भी ठीक है, 4 5 6। यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया, 2 की पावर 2, यहाँ से मैंने 2 की पावर 3 लिया और यहाँ से 2 की पावर 4 लिया। तो यहाँ से जब ये लिया तो ये जैसे वैसे 2 रहेगा और 2 की पावर 2, सेम चीज यहाँ से रहेगा। तो 2 की पावर 2 भी बाहर लिया, 2 भी कॉमन ले लिया, तो ये 2 की पावर 9 9 और 10 10 और 12 12 और वो 30, 2 की पावर 13 इज द आंसर, करेक्ट है? आई होप दैट इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी, करेक्ट है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।